Good morning, everyone. Good morning, Ashok. So, today we will discuss. Good morning to all. So, this is one of the most demanded topic in the when it comes to the civil service examination in India. Let it be OPSC or UPSC. That does not matter. The matter is that whether you have covered the topic or not. The topic is so important that hope the screen is coming to all. Everyone is watching me. This topic is one of the most demanded topic when it comes to the civil services. So OCS मेंस यदि हमें देखा in the 2021 and 2022 which is going to be held, तो ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक रहे लास्ट टाइम भी ज्योग्राफी ऑप्शनल रे जदि हमें देखा ज्योग्राफी ऑप्शनल रे क्वेश्चन आसला देन एई वर्ष यूपीएससी जदि हमें देखा मेंस एग्जाम रे आसी यूपीएससी मेंस 2022 दिस ईयर ये क्वेश्चन आसी अगेन तो ये प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर दिस क्वेश्चन इज बीइंग रिपीटेड बिकज जदि आम कहवा कि कहीं पढ़ा प्रथम कथा मुझे भी कौन टॉपिक नहीं मुझे तार लॉजिक बताए कि वेदर शुड वी गो थ्रू दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज हैविंग द वेटेज और नॉट. Yes, this topic is obviously, no doubt, is having so much of weightage in India because let it be polity. You are, let's say, if you are talking about the polity, this topic will definitely come in terms of the what, that is the what federal structure. That would be the federal issues and the cooperative federalism. That means when it comes to the polity, it would be the federal issue. Obviously जो तुम्हारा फेडरल इशू अच्छी इन दैट फेडरल इशू द वट सेंटर स्टेट रिलेशन फेडरल इशू इवन आई सेड बट द सेंटर स्टेट रिलेशन भी ये टॉपिक आसो तुम जो मनकर पीएसआईआर अच्छी सेंटर स्टेट रिलेशन अच्छी दैट मीन्स आम कह पॉलिटी भी आसीपर गवर्नान्स रे पढ़ी पार देन ज्योग्राफी ऑप्शनल एथरे आसीबो जीएस रे आसीबो इवन तुम एसए एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट कि एसए रे भी तुम डायरेक्ट क्वेश्चन आसीपे. सो गुड मॉर्निंग दिलीप ब्रह्मा दैट इज सेयांस everyone. So this topic is having definitely is having so much of weightage and you have to throw the weight behind this particular topic as well. I will urge everyone to go through this topic in a detailed fashion way so that at least you will feel confidence before entering into the hall. Good morning, Suresh. So what this topic is having importance for the essay, GS, geography, and state relation when it comes to the federal issues and the problems, or let's say the cooperative federalism as well. I will say the let's cooperative federalism. This is also the area where this question could be asked. So so we are constantly guiding the aspirants and we are putting so much of efforts. Lalit sir is there, Purushottam sir is there, and me also there. I'm myself also there. We three people are constantly putting effort for this mains and the upcoming OCS exam as well. We're putting our best, and I hope you guys will be in touch with us and let's make your dream true as well. Make your dream into reality. This is the theme of Ways of, and what I would say the Odisha Job Academy, we are single platform. Now the topic of the day is that
river dispute in India. The topic is that what? That is the water dispute, or I will say the river dispute, or it would be what? The river disputes in India. They already SIC. Siddharth, good morning everyone. So now we will talk into the our lesson. हमरो lesson को आसीबा जेबे हाँ मु तुमको पचार कहूली कि कहीं ये क्वेश्चन बारंबार पचार जाउछि दिस ईयर जदि आम देखा दिस ईयर यूपीएससी मेन्स रे पचारि तुम मैंने देखीदेव जोग्राफी ऑप्शनल रे क्वेश्चन आसी तो लास्ट ईयर ओपीएससी पचार ए वर्ष यूपीएससी क्वेश्चन पचार तो फ्रिक्वेंटली जदि आम देखा है ना तो हमें फ्रिक्वेंटली देखा ये क्वेश्चन को पचरा कौन पाई तो रीजन कौन रीजन इज द वर्ड फास्ट रीजन तो हमें कजेस तो ओबियसली मु कजेस को जीवी जे कहीं पचरा जाऊँगी कारण ये सेंटर स्टेट रिलेशन को अफेक्ट करुच्ची जदि आम देखा जो आम जो सेंटर स्टेट रिलेशन अच्छी तो ताकू कोठी ना कोठी से इम्पैक्ट पकाउची से ये टॉपिक बहुत जरूरी हो पारे एंड जेहेतु all of you aspirants you are also going to work in this particular I would say but the civil servant हिसाब से जब काम करो you would be also in that field to enforce the law and order and to enforce all these things. Good morning Anupriya. So that is why this topic is आम कहबा धीरे धीरे बहुत सारा डैम्स इंडिया रे आसुची बहुत सारा डैम्स कंस्ट्रक्शन होची मल्टी प्रोजेक्ट होची बहुत सारा मल्टी प्रोजेक्ट होची बैरेजेस होची सो कैनाल्स होची तो दीज आर द थिंग्स एंड सबू स्टेट सब जदि आम देखिए कॉम्पिटिटिव आम ए कौन कहे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म hope the aspirants will but you would be able to catch me competitive and cooperative federalism when I say competitive and cooperative federalism that means that every districts and the every state in India they aspire to become one of the what top state in India like the Gujarat model or I would say the Tamil Nadu model or Maharashtra model what would be in your what opinion it's up to you so that means all state they want to develop both from the what agriculture and industry both way रे ସେମାନେ develop କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି and both for the industry and agriculture water is one of the most important resource when it comes to the development କାରଣ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ହାଇଡ୍ରୋ इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स वाटर जदि आम सिग्निफिकेंस देखा बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस वाटर जदि रिवर्स ईदर आई वुड से द रिवर सिग्निफिकेंस मु आगे फास्ट रिवर सिग्निफिकेंस ऊपर देखी डिस्कस करी देन आई विल टॉक्स अबाउट द कॉजेस ऑफ रिवर डिस्प्यूट देन सॉल्यूशन को आसबि तो टिके लेंदी क्लास रहिबो एंड आई होप यू विल हैव द पेशेंस एटलिस्ट 1.5 आवर क्लास नबा पूरा डेप्थ रे आम खत्म करदवा रिवर डिस्प्यूट्स ताकि आउ किसी केस स्टडीज भी किसी आम देखीदवा तो फास्ट मु देखिए कि सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर लेट्स से द प्रेजेंट डे रे हमें सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर देखिबा तो फास्ट आई विल टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवर so when it comes to this water dispute or I would say the river dispute the significance what the simple the significance will be the first significance is irrigation. Now irrigation is one of the most important facts in India is irrigation is one of the most important but because हमको दरकार एग्रीकल्चर आउ एग्रीकल्चर प्रमोशन पे दरकार तुमको इरिगेशन देन इट कम्स टू द हाइड्रो electricity that is also one of the important component then comes to the drinking water this is why this is also needed then I would say what let's say aquaculture that is why then it comes to the resources when I say resources like water or I would say the fish then it comes sand and other minerals so these are the resources we are also getting from the river that means the significance of the river when we talk about the river or the large water body that would be the water would be used for the irrigation purposes because we need what food security we need to ensure what food security as we need to ensure the food security that is the what National Food Security Act
2013 also there to ensure the food security in India. ओके एंड डब्ल्यूटीओ रे जदि तुम मैंने डब्ल्यूटीओ इश्यू पढ़ी जो मुझे डब्ल्यूटीओ पढ़ुली से डब्ल्यूटीओ रे इंडिया को कौन जाइए कनसेसन दि जाइए है ना दोहा एग्रीमेंट कथा मुझे पढ़ी है ना देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नाउ एनर्जी ट्रांजिशन इज गोइंग ऑन इन इंडिया so energy transition not only in India, the energy transition is around the world is going on the energy transition. That means ame jo conventional energy ru non conventional energy or we are moving to the towards the green energy as everyone or the every states want to attain the SDG goal sustainable development goals ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି which is the source of renewable energy ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି production ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ so that is also one of the reason कि ଆମେ कहବା river significance ବଢ଼ିଯାଏ then it comes to the drinking water over half of the Indian I would say almost more than 30% of the total population in India they are deprived of the clean drinking water so that is why to address that government of India also having that har ghar jal yojana 2022 central sponsored scheme हमें कहवा है ना सो दैट मीन्स ये भी हमें कहवा सो सेंट्रल सेक्टर ही थो साइथ देखी दो टिके है ना तो ड्रिंकिंग वाटर भी हमें देखिबा देन इट कम्स टू द एक्वाकल्चर लाइक रिवर हमें फिशिंग वगैरह ये सब आसी जाउची देन रिसोर्स मुकल इन टर्म्स ऑफ फिश है जो इन टर्म्स ऑफ वाटर नहीं जाओ sand and other minerals this makes the river itself one of the most important and continuous issue in India है ना तो these are the what hope everybody is getting me and जो link तुमने share करी परियो तुमन को जेते जो those who are the other candidates those who are writing they don't aware of this platform let them also aware by sharing this link as well and if in the meantime if somebody is having any query you can also ask. I'm constantly monitoring your comments. Okay, so now this is why the rivers is very important in India. Okay, huge multi-purpose dam करा जोची कारण है ना ये रहिबो हमर river significance. Now we will talk about the causes of river disputes. ये तो हमें river significance हमें देखिले plus तमें जानते river significance आउ कोन because of the flood management. तो जो स्टेट आम देखा जमती कि फ्लड मैनेजमेंट भी ये गोटे बहुत बड़ इश्यू क्या फ्रिक्वेंट फ्लड आसे इंडिया रे है ना फ्लड मैप भी तो समस्ते जानी थो आई बिलीव एवरीबडी इज ऑल्सो अवेयर ऑफ द फ्लड मैप ऑफ इंडिया ओके सो दैट मीन्स रिवर को मैनेज करवा रिवर वाटर सब गोटे कंटिन्यूअस इश्यू इन इंडिया कारण ये समस्त को दरकार आउ रिवर रो मु इंपोर्टेंस तुमको देखिदेली नाउ वी विल कम्स टू द रिवर डिस्प्यूट जेतले आम आसुचे रिवर डिस्प्यूट आम देखा के मेजर रिवर इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट इन इंडिया तो प्रथम कथा तो जो मेजर रिवर आमर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अच्छी ये मैप देखिपर ना दिस इज द मैप के मेजर इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट इन इंडिया एथरे ये हूँ तुम डिस्प्यूटेड जमती कि आम देखा हियर इज द व्हाट इंडस व्हेन आई से इंडस दैट मीन्स इंक्लूड्स द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस देन इट्स कम्स टू द कोसी it comes to the Brahmaputra as well. So these are the rivers, the important rivers. But जो rivers सब हमारे disputed rivers अच्छी से मैप को समझते देखी परिव disputed rivers and this is very important है ना तो इतने obviously पेरियार कृष्णा मंडवी और महादया नर्मदा is there Ravi B Satluj also there Bangsadhara between Odisha Andhra Pradesh Godavari multi-state Kaveri multi-state dispute Brahmaputra is also disputed. Kosi also disputed. Then it comes to the what other. Even tomorrow Narmada we already discuss karichi. So this is the river dispute map of India. तमें देखी परिवो the river dispute map of India. है ना तो रिवर डिस्प्यूट मैप ऑफ इंडिया मु तुमको देखिए देली है ना ये तुमरो ऑप्शनल रे आसीबो जीएस रे आसीबो एसे राइटिंग रे आसीबो है ना गवर्नेंस रे भी तुम लिखि परियो कि कोठी कोन हमर प्रॉब्लम रोची गवर्नेंस रो जा भी हो तो ये तो रिवर डिस्प्यूट मैप तो आगे हमें डिस्प्यूट रो कजेस जानिबा आगे तो आगे कजेस जानले देन हमें सॉल्यूशन को जीवा तो देखा तो आगे कजेस कोन रिवर डिस्प्यूट रो कजेस फर्स्ट हमें देखिबा कि कजेस कोन व्हाट आर द कजेस ऑफ रिवर डिस्प्यूट्स है ना तो होप नाउ द मैप इज विजिबल टू ऑल द रिवर डिस्प्यूट रो कजेस मु लिखिबी कि किछि थाए हमरो क्लाइमेटिक कजेस किछि थाए हमरो लेट द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कजेस एंड क्लाइमेटिक कजेस सो आई विल डिवाइड द रिवर डिस्प्यूट कजेस इनटू
political causes, then climatic causes. I will divide the river dispute into different or causes को ମୁଁ ଟିକେ divide କରିଦେବି ଏଇଥିରେ climatic causes for the river dispute and the economic causes ଆମେ ଦେଖିବା. Then I would say simple ମୁଁ କହିବି social, economic and social. So these would be the different causes हमको देखा ଯିବ river ଯଦି dispute ର ଆମେ causes को ଦେଖିବା. For example climatic causes ଅଛି, then ଆମେ political issues को ଦେଖିବା, है ना, ये देखिबा. आउ कोन अछि अच्छा पॉलिटिकल इशू को आगे देखिबा ना. पॉलिटिकल इशू रो सबुठ इंपोर्टेंट हैला रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. समस्त लेखुथिबो शॉर्ट नोट. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट. Now reorganization of the state one of the major topic and one of the major issue for the river dispute in India. Reorganization of the state ताकू मु बुझेबी बिल्कुल. Then हमें कह political motivated. Political motivated. Next आसीबो कोन तमरो political motivated. Now reorganization of the state रो meaning कोन. जदि तमे देखिबो छत्तीसगढ़ 2000 मसिया रे छत्तीसगढ़ हैला. Jharkhand also came to exist in 2000. Uttarakhand also came to exist in 2000. In 2014 comes your Telangana. So these are the new state forms. तो जेतले नुआ state formation होची, boundary change होची, and that will obviously lead to the disputes of the river. For example, if I talk about Mahanadi disputes, before 2000 there was no Mahanadi disputes because it was only two states was there. Okay, it was Madhya Pradesh and Odisha, they were sharing the river. Now the river is the multiple state. When जेतले आउ गोटे state आसुची in form of आमे कहबा छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ भी चाहिबो जे से कोन हबा पई आउ टिके डेवलप हो पई. से भी चाहिबो मु गोटे एस्पायरिंग स्टेट हुई मु भी डेवलप के ता पई ताकू वाटर दरकार. And water one of the major resource. तेणुकरी से कौन करिवे डैम बनैबा स्टार्ट करिवे, इंडस्ट्री करिवे, एग्रीकल्चर करिवे. सो छत्तीसगढ़ नीड वाटर and that is why reorganization of the state one of the major reason for the water dispute in India. And I hope you are getting me. Hope everybody is getting me. Shreya Princess Bujapurcho, Anupriya, Siddharth, Suresh, Dilip, Brahma, Shreya, Shreyanes. होप एवरीवन इज गेटिंग मी. जितेंद्र है ना, अशोक कुमार साहू. तो होप समस्ते बुझा पड़ुथो है ना. सो दिस वुड बी द तमरो वन मोर फ्री क्लासेस यूट्यूब रे नवा. देन मु नेबी देन तमर ऑल द क्लासेस जो माने पेड स्टूडेंट हमर अच्छो नाउ फ्रॉम द मंडे ऑनवर्ड्स ऑल द पेड स्टूडेंट है ना द क्लास विल बी हेल्ड इन द ओजेए प्लेटफॉर्म ओडिशा जॉब एकेडमी प्लेटफॉर्म रे हबो है ना. तमरो रहिबो एबे आमे खाली फ्री क्लास नउची अप टू संडे वी विल टेक द फ्री क्लासेस. देन द फ्री क्लासेस विल बी स्टॉप. ओके जा भी हो दिस वुड बी द लास्ट फ्री क्लास ऑफ माय लेसन. ओके देन ललित सर आउ पुरुषोत्तम सर आउ गोटे गोटे फ्री क्लास नहीं जबे. दिस इज अप टू देम एंड फ्रॉम द मंडे वी विल नॉट हैव फ्री क्लासेस. ओनली द पेड स्टूडेंट विल हैव एक्सेसिबिलिटी टू द एप्लीकेशन एंड वेयर वी विल कंडक्ट द रेगुलर बेसिस रे मॉर्निंग इवनिंग रे क्लासेस नहीं कि हमें कंप्लीट करिबू इन अ डेप्थ वे टू कंप्लीट द जीएस एंड ऑप्शनल एज वेल. Now I will comes to the political factors रे हम देखिबा कि प्रथम तला reorganization of the state गोटे fact. Then political motivated means जेमति कि हम देखिबा before 2016 and 2017 there was no Mahanadi issue, but it's just because of the what election, the general election, the BJD government they raised the issue. ओके सो दैट मीन्स कौटी ना कौटी आम कहवा कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड थाए. नाउ इट्स कम्स टू लेट्स से जो गुजरात इलेक्शन आसूची, जो महाराष्ट्र इलेक्शन आसूची, जो आम कह स्टेट इलेक्शन होची से गोटे स्टेट आउ गोटे स्टेट उपर आरोप लगाती सो दैट टू गेट द पीपल्स मैंडेट टू शो द सम सॉर्ट ऑफ व्हाट आम कहवा गोटे एक्सक्यूज देखा लोक को. तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड गोटे भी कज थाए रिवर डिस्प्यूट रो. अनदर इंपोर्टेंट कज होची पॉलिटिकल मोटिवेटेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट. मु तुमको ऑलरेडी कहीदेली कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट. ओके सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जदि आम कहवा कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑल्सो अनदर इंपोर्टेंट रीजन जो थी कि आमको देखा पड़ो कि ये है ना. तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट को टिके मन रखिबो.
देन आम पॉलिटिकल इश्यूज रे आउ कौन देखा कि आमर पॉलिटिकल इश्यूज रे जो जदि मु कहबी जो जमती कि आमर लेट्स से रिवर बेड अथॉरिटी कथा नहीं जाओ है ना रिवर बेड अथॉरिटी इंडिया रे आज पर्यंत हो पाला नहीं जदियो तुम इंटरस्टेट रिवर बेड जदि एक्ट अच्छी 1956 कथा नहीं जा रिवर बोर्ड एक्ट जो अच्छी बट आज पर्यंत रिवर बोर्ड हो पारा ନାହିଁ तो कहीं हो पारानी सेटा भी आम कह गोटे पॉलिटिकल कजेस बा है ना सो दीज आर द आम कह डिफरेंट पॉलिटिकल कजेस ऑल्सो देयर ठीक अच्छे तेणु करके पॉलिटिकल कजेस फैक्ट्स को आम एतिक रखा बाकी जहाँ भी पॉलिटिकल फैक्ट्स आसो जहाँ लेटेस्ट डेवलपमेंट यू हैव टू आड फ्रॉम योर साइड नाउ कम्स टू द क्लाइमेटिक कजेस आम देखा कि व्हाट आर द क्लाइमेटिक कजेस फॉर द रिवर डिस्प्यूट्स इन इंडिया. So climatic causes, when I say climatic causes in the river dispute, so climatic causes रे first causes रहबा एलिनो and लालिना. एलिनो and I would say एलिनो not लालिना. Why? Because लालिना टाइम रे रेनफॉल अधिक हुए तेणु suddenly I would say only एलिनो. So एलिनो is the what major factor and the drought. And the what drought El Nino and drought is the major factor for the what river dispute in India. One of the major factor मु कोई भी climatic factor है. Okay, so one of the major factors जैसे हमें देखा drought or the El Nino year को हमें let me change the color. Hope the writing is visible all. Writing is visible to all. Could you please anyone comment? ओके सो एलिनो टाइम रे कौन हुए जमती कि तुम 2016 2017 2018 दिस वे द एलिनो इयर्स तो जेहेतु रिवर बोर्ड आगु को एक्सप्लेन करी समस्ते नोट बनाऊ रिवर बोर्ड आगु को एक्सप्लेन करी डोंट वरी हैव पेशेंस एंड आगे आम डिस्प्यूट पढ़ुचे कजेस सो एलिनो इयर्स जदि आम देखा 2016 2017 ऑल दिस वेयर द व्हाट एलिनो इयर्स तो जितेबाला एलिनो इयर्स होची सेई टाइम रे इंडिया रे रेनफॉल टा कोन हेबो दैट वुड द डेफिशिएंट रेनफॉल इंडिया रे कोन हेबो डेफिशिएंट रेनफॉल हेबो सो बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंट रेनफॉल सेतेबाला होस आसीबो जेमते कि देख 2016 17 जदि वाटर रेनफॉल कमीगला इंडिया रे सेमती ओडिशा गवर्नमेंट एक्टिव हो गले कि यार महानदी रे तो वाटर लेवल कमीगला कौन पई ना जदि भाव एक्स रेनफॉल जदि ठीक ठाक होता छत्तीसगढ़ भी वाटर रखिकी कर कौन से तो फ्लड हो से वाटर से छाड़देव जेहेतु डेफिशिएंट रेनफॉल थिला बा एलिनो ईयर थिला छत्तीसगढ़ भी पानी छाड़िया को हेजिटेट करूला तेणु करके जिते एलिनो ईयर जदि बैक टू बैक आसो रेनफॉल जब इंडिया रे कमिज दैट टाइम रिवर डिस्प्यूट बढ़ीज से अवेयर हो एवरीबडी विल रिक्वायर्ड फॉर द मोर वाटर दे विल डिमांड मोर वाटर इन इंडिया सो okay so in that case the number of dispute will obviously increase then what global warming and irritant rain pattern जदि हमें देखिबा irritant rain pattern or the precipitation irritant precipitation when I say irritant precipitation that means the what it's a irregular and those region जदि हमें देखिबा सो दोज रिजन जदि आम देखा तुमको इरिटांट अर्थ कौन जो रेनफॉल आगुरी 100 सेंटीमीटर होता लेट्स से 60 सेंटीमीटर होची दैट मीन्स ऑल द रीजन इन इंडिया दे आर नॉट गेटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल द रेनफॉल वेरिएशन ऑल्सो मोर पर्टिकुलरली द रेनफॉल वेरिएशन इन द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल इंडिया इज मोर एज कम्पेयर टू द सदर्न एंड द ईस्टर्न इंडिया सो व्हेन आई से इरिटेंट मानसून और यू मे से the monsoonal causes or another factor is the what I would say irritant monsoon or the irregular monsoon that also you can write the irregular monsoon and the what irritant monsoon irregular monsoon रो हमें दीटा जिनस को लिखवा एक तो onset of monsoon
ये ऑनसेट ऑफ मॉनसून केवे केवे डेरी हो जाए तो डैम समस्त आमको इरिगेशन पानी पानी दरकार देन आउ गोटे प्रॉब्लम थाए कौन जो आम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल से अनइवन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल टा कौन थाए अनइवन थाए दैट मीन्स द मॉनसूनल onset of monsoon रो ठीक ठाक नहीं distribution of the rainfall pattern is also pretty hard in India and also not it's not what predictable as well. Let's say this year Odisha has experienced 100 centimeter or the 150 centimeter rainfall. Who knows what will happen in the coming years. Okay, so that is why that means the rainfall also आम कह rainfall जो pattern अच्छी and तार disputes बा जहाँ भी होची that is also one of the reason for the dispute करिबारे आ गोटे major reason होची rainfall pattern है ना फ्रिक्वेंटली चेंज होची देन कम्स टू द ग्लोबल वार्मिंग नेक्स्ट आम देखा ग्लोबल वार्मिंग द नेक्स्ट कॉज क्लाइमेटिक फैक्टर आम देखा ग्लोबल वार्मिंग तुमको हाउ ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू द रिवर डिस्प्यूट इन इंडिया बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड द राइजिंग टेम्परेचर ऑब्वियसली राइजिंग टेम्परेचर दैट विल रिक्वायर्ड मोर वाटर टू एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर को अधिक वाटर दरकार बिकॉज ऑफ द एवापोरेशन सॉइल मॉइस्चर कमी कमी जीव है ना वाटर बॉडीज ड्राई अफ हो सो दैट्स व्हाई वी नीड व्हाट मोर वी नीड मोर वाटर सो दैट इज व्हाई आम कह ग्लोबल वार्मिंग जिते ग्लोबल वार्मिंग आसो ना दैट टाइम ऑल्सो दैट वुड बी व्हाट प्रॉब्लम से आमको प्रॉब्लम देखा एंड वी नीड मोर वाटर ऑल्सो इन दैट पर्टिकुलर टाइम ओके सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन आम कह कि मनसून टाइम भी आमको सो दैट मीन्स मोर मनसून जो ठीक ठाक न हो वाटर दरकार तो क्लाइमेटिक कजेस आम देखिले एलिनो देन इरिटेंट मनसून आई से व्हाट इरिटेंट मनसून इरिटेंट मनसून से तुम लिख जोटा कि आमर ऑनसेट ऑफ मनसून तादर भी प्रॉब्लम हुए एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ये भी तुम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑनसेट इज अनप्रेडिक्टेबल सो दीज आर द थिंग्स आम आपको देखिपे ओके सो देन आम नेक्स्ट आसवा क्लाइमेटिक कजेस रे मु तुमको कहली ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग ताद्वारा कौन हम जो वाटर बॉडीज अच्छी हमारे वाटर बॉडीज विल बी ड्राई ऑफ देन सॉइल मॉइस्चर बहुत फास्ट लूज करिवो मॉइस्चर losing fast hence we required more water or for the irrigation so these are the climatic causes ame dekhi pariba the climatic causes then comes to the economic and social issues when we comes to the economic and social issues there we have to talk about the what let's say ame कहबा infrastructure in terms of what dams तो ame dams construction होची barrages construction होची okay canals होची so these are the infrastructure जेतलो आमे कहूचे टैंक बनौचंती टैंक like Tandula tank in Chhattisgarh number of barrages is being made by Chhattisgarh so number of dams and barrages also is being constructed in Chhattisgarh in the different or on the what I would say different tributaries and what watershed region of Mahanadi hence the dispute is increasing तो आम कह बहुत सारा जगह में देखा पड़ो कोठी बैरेज होची कोठी डैम्स होची कोठी टैंक करूचंती हेंस ऑब्वियसली सो दैट मीन्स आम कह इकोनॉमिक कॉजेस रे में देखले है ना तो ये सब आमको देखा जाउची होप यू आर गेटिंग मी दैट मीन्स आम कह सोशल इश्यूज एंड इकोनॉमिक इश्यूज रे ताकू लिखि देबो एंड समस्त चाहते डेवलप होवा पई every country wants to be every sorry state wants to develop so climatic issues तुम लिखि देबो कि climate द्वारा कौन होची political motivated लिखि देबो and all these the causes for the river disputes in India okay causes of dispute आम देखि जिबा now we will comes to the number of river dispute obviously तुम देखि परिबो these are the river जोटा कि disputed अछि गोदावरी river महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक ओडिशा मध्य प्रदेश सो वन ऑफ द लार्जेस्ट आम कहबा वाटरसेड रीजन गोदावरी तार रखी है ना दीज आर द डिस्प्यूट्स आम देखा नाउ डिस्प्यूट मैप मुझे देती देखो सो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स
is one of the most important issue in India. That is why we are going through this topic now. So Interstate River Dispute Act 1956 तार सॉल्यूशन दिए बहुत सारा सॉल्यूशंस बा तार दैट इज बट जुरिडिक्शन को हमें डिफाइन करे ना इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट अनुसार आम कौन कर tribunal will be but would be made for the solution, and tribunal decision would be the final decision, final and binding. It would be what? Final plus binding and binding रहिबो. This decision, the decision of the tribunal would be final and binding on all the parties and all the parties रहिबो. तो कॉजेस हमें देखिथिले, डिस्प्यूट रो मैप्स देखिथिले. ना कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस related to the water law. Entry 17 state list. हमें देखिए entry 17 of the state list deals with the water supply, irrigation, canal, drainage, embankment, water storage and water power, that is the hydropower. So these are the state list रे आसुची. That means state is free to construct the canal, embankment, dams. They will free to construct. तो से माने कौन करिबो? कंस्ट्रक्शन करि परिबे. ओके तो यहाँ आमको देखा देन आम देखा एंट्री 56 ऑफ द यूनियन लिस्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट एंड द रिवर वैली टू एक्सटेंट दैट इज व्हाट डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट टू एक्सपेरिमेंट द पब्लिक इंटरेस्ट. दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी कौन कर इंटरस्टेट रिवर जोटा अच्छी इंटरस्टेट रिवर मुझे कहि है ना इंट्रास्टेट नुह ता उपरे से माने लॉज बनै परिबे बा ताकू हम कोन करिके जदि हम कहबा एक मिनट तो तापरे हम कोन करे तापरे लॉज बनै परिबे ताकू रेगुलेशन करि परिबे रिवर वैली प्रोजेक्ट करि परिबे और हम कहबा रिवर बोर्ड भी करि पारंती रिवर बोर्ड ऑफ इंडिया लेट्स से इंटरस्टेट रिवर बोर्ड ऑफ इंडिया भी करि पारंती. ना आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट इन इंडिया. ना ट्राइब्यूनल कथा हम जहाँ को कहे तो ट्राइब्यूनल आम जी देखा केते ट्राइब्यूनल फॉर्मेशन करा जाए तो ये आम सॉल्यूशन पार्ट को आसूचे कजेस पार्ट को आम खत्म कर देचे. द इंटरस्टेट डिस्प्यूट आमर कजेस आम देखी सॉल्यूशन आम देखिले कि देख जो आज डैम छत्तीसगढ़ तैयारी करुँची तार अधिकार अच्छी having the right because it's coming under the state list. Now any object or anything which is reflect in the state list, obviously the state is empowered to do that. That means say water storage है जो barrages है जो dams है जो. But central government in the meantime the central government also having the right if the parliament किसी enact करूँची law वगैरह है ना. so that what that means आम कहवा जोड़ा मुझे कहती कि जो आमर कौन अच्छे से भी लॉ बन पारती दे कैन ऑल्सो मेक द लॉज रेगुलेशन they can do all these things for the for the peaceful coexistence, for the cooperative federalism, for the solution of the interstate river by interstate problem को solution करी पारिबे. तो आर्टिकल 262 of the Indian Constitution deals with this बा तार solution ପାଇଁ ट्राइब्यूनल करा जाए. ना ट्राइब्यूनल रे जजेस किए थांती तमे जानछो सुप्रीम कोर्ट रो जजेस थांती है ना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रो जजेस रही पारिबे. ओके द ट्राइब्यूनल्स रो किछि बाइंडिंग ट्राइब्यूनल कोन थाए ये थाए बाइंडिंग आर वर्डिक बाइंडिंग थाए बट ये टाइम बॉन्डेड नो. दिस वन इज नॉट टाइम बॉन्डेड तो आपको किसी टाइम दिया जाए नहीं. ट्राइब्यूनल डिसीजन पास खाली फाइनल एंड बाइंडिंग थाए है ना तार किसी टाइम ड्यूरेशन नहीं. तो केतेटा ट्राइब्यूनल हम तार भी किसी लिस्ट नहीं. ट्राइब्यूनल कौन आम कह गोटे परमानेंट नहीं ऑल आर द एडहॉक. ये सब कौन एडहॉक ट्राइब्यूनल जिते भी आम रिवर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स अच्छी ऑल आर द एडहॉक ट्राइब्यूनल. नॉन ऑफ देम्स आर व्हाट आम कहवा परमानेंट. कहीं भी परमानेंट नुह सब जाक एडहॉक. तो आम पार्लियामेंट दैट मीन्स आम कहवा जो रिवर आमर डिस्प्यूट अच्छी बा रिवर डिस्प्यूट को जहाँ आम देखुचे ये सब कौन जो बोर्ड गुड़ा अच्छे बोर्ड तो नहीं आमर कौन अच्छी ना आमर जो ट्राइब्यूनल अच्छे सब एडहॉक. जमी महानदी उपर ऑलरेडी ट्राइब्यूनल हो सारी महानदी ट्राइब्यूनल. तो महानदी ट्राइब्यूनल भी गोटे एडहॉक.
तार काम सरीगले से खत्म हो ताले आम कह रिवर डिस्प्यूटर सॉल्यूशन कौन ना ट्राइब्यूनल अच्छी आर्टिकल 262 अच्छी तादर आम ट्राइब्यूनल कर जो सुप्रीम कोर्टर जजेस हाइकोर्टर जजेस ट्राइब्यूनल जहाँ भी डिसीजन देव से फाइनल एंड बाइंडिंग है ना ये आम देखिले देन आम देखा ये लिखाई नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉट ऑल अदर कोर्ट कैन एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन ओनली किए कर ट्राइब्यूनल आउ कहीं कर सॉल्यूशन ओके ये दिखाई तुम देन आम देखा रिवर बोर्ड एक्ट ये तुम इंपोर्टाट आसला जोटा पचाऊला पूर्व कि रिवर बोर्ड जोटा तुम अजीत सामल पचाऊला कि रिवर बोर्ड उपर डिस्कस करूँ ना रिवर बोर्ड उपर जो आम डिस्कस करवा है ना तो रिवर बोर्ड देखा द एक्ट एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टाब्लिश द रिवर बोर्ड इंटरस्टेट रिवर बोर्ड को कौन करवा आम एम्पावर्ड करे कि इंटरस्टेट रिवर बोर्ड करा जाओ ना तुमको रिवर बोर्ड रो काम कौन आम देखा ध्यान से आम देखा ना जदि लेट से गोटे रिवर बोर्ड हो गला तो रिवर बोर्ड रो काम कौन दे विल रेगुलेट द रिवर जो रिवर रो वाटर अच्छी ताकू रेगुलेट करवा दैट वुड बी द फाइनल एंड बाइंडिंग लेट से आम गोटे रिवर बोर्ड कले छत्तीसगढ़ ओडिशा पई गोटे रिवर बोर्ड करागला फॉर एग्जांपल लेट से इंटरस्टेट रिवर बोर्ड अच्छी नंबर ऑफ बोर्ड हो पार फॉर एग्जांपल आम महानदी बोर्ड करदे महानदी आम गोटे महानदी पे गोटे आम इंटरस्टेट रिवर बोर्ड बट करदे ना दैट बोर्ड विल डील्स विथ द महानदी ओनली दैट विल डील विथ महानदी कि महानदी उपरे डैम हम कि नहीं महानदी उपरे छत्तीसगढ़ बैरेज करिवो कि नहीं महानदी उपरे कौन प्रोजेक्ट हम कौन नहीं दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द रिवर बोर्ड है ना जो थे बोथ पार्टीज विल बी देयर बोथ पार्टीज मीन्स बोथ ओडिशा एंड आम कह छत्तीसगढ़ बोथ द गवर्नमेंट विल हैव शेयर ओके तेणु करके प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट ए न्यूट्रल बॉडी रहा इट वुड बी न्यूट्रल बॉडी इट वुड बी ए न्यूट्रल बॉडी एंड द बॉडी जहाँ डिसाइड करिवो सेटा ही आमर फाइनल रहिबो दैट मीन्स ये देखा जाए इंटरस्टेड जो रिवर बोर्ड रो डेवलपमेंट रो काम ये रहिबो रिवर फ्लड इश्यू को से माने एड्रेस करेंगे डैम हो गला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिवर किसी प्रॉब्लम हो गला ये सब करा बट आज पर्यंत रिवर बोर्ड अथॉरिटी हो पारा नहीं ये गोटे प्रॉब्लम इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 यदि आम देखा तो स्टेट गवर्नमेंट कौन करे केमी ट्राइब्यूनल बना जाए प्रोसीजर कौन प्रोसीजर फॉर मेकिंग ट्राइब्यूनल तो आम जो ट्राइब्यूनल को केमी करा जाए द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग ट्राइब्यूनल जब मुझे देखी प्रथम तो जब रिवर डिस्प्यूट है फास्ट यू हैव टू अप्रोच द सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान से मन रख सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करा पड़ो द सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक टाइम 1 ईयर विदिन 1 ईयर भितर जदि सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्यूशन किसी देला देन द स्टेट वुड बी हैप्पी एंड द इश्यू वुड बी टर्मिनेटेड तो स्टेट कौन हो हैप्पी हो एंड इश्यूटा खत्म हो जदि भाव गोटे वर्ष बीतीगला सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी आमिकेबल सॉल्यूशन पाइले नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन करती एथरे मेडिएशन करती बिटवीन द स्टेट्स और अमंग द स्टेट्स मेडिएशन करिकी जो प्रॉब्लम थाए ताको सुलझाइबा पाई चेष्टा करती जदि से मेडिएशन काम नदेला सेंट्रल गवर्नमेंट कौन करेंगे कहे ठीक अच्छे ट्राइब्यूनल करदेवा देन आम ट्राइब्यूनल पाखक आसू द ट्राइब्यूनल वुड बी सेटअप बाय हुम इट वुड बी थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ताको सेटअप करिवो है ना तो ट्राइब्यूनल वुड बी सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट मीन्स आम कह जो महानदी डिस्प्यूट है तो ओडिशा गवर्नमेंट फास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच कले कि सार फाइंड आउट ए एमिकेबल सॉल्यूशन bring the Chhattisgarh government into the table and we will discuss together if any kind of solution is coming out the amicable solution asuchi then it would be fine otherwise we will demand for the setting of a what tribunals ame kariba and that would be our demand now solution baharla nahi tenu kori tribunal pakhre issue jai ki pahunchi chi and tribunal re ame kaiba the topic is now in the tribunal we are also waiting for the final judgment. Okay, this is the procedure to establish the tribunal. Then now interstate river dispute आम एबे देखिबा history and also the तार आम देखिबा वर्तमान जो सिनारियो अछि कोठी कोठी रिवर डिस्प्यूट चली तो फास्ट डिस्प्यूट देखो गोदावरी डिस्प्यूट वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्प्यूट गोदावरी रिवर डिस्प्यूट
तो जिते भी इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट आसूची इधर गोटे जनरल क्वेश्चन आसीपे ना पर्टिकुलर आसीपे जमती कि पर्टिकुलर क्वेश्चन कहले डिस्कस द महानदी वाटर डिस्प्यूट दैट मीन्स आपको आम कह पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हेन आई से डिस्कस द रिवर डिस्प्यूट्स ऑफ इंडिया दैट टाइम्स आई एम टॉकिंग द ऑल रिवर डिस्प्यूट्स ऑफ इंडिया तो ये तुम इधर पर्टिकुलर क्वेश्चन आसीबो और आम कहवा कौन जनरल क्वेश्चन आसीपे ओके तो व्हेन आई कम्स टू गोदावरी रिवर डिस्प्यूट आई एम दैट मीन्स आई एम कन्फाइंडिंग माई सेल्फ इन टू द पर्टिकुलरली टू द गोदावरी रिवर एंड द गोदावरी रिवर इज द what second largest river of India and having the one of the largest catchment area and the watershed region in India. So catchment and the watershed region is one of the highest in India. This is what I would say the second largest after the Ganga river. The river passes through Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Odisha, and also Chhattisgarh. And also what? Chhattisgarh. Now you might have a sort of doubt whether the river is passing through all the states. 100% the river passes is all the states because the main river, though the main river is not passing, but the tributaries of this particular river, the tributaries are passing or the coming from this particular states. Let's say I would say the Sabri, Sileru, Indravati, these are the rivers coming from Odisha and the meeting with the Godavari river, hence Godavari basin re Odisha asi jauchi. Then Maharashtra kotha naiba, obviously from the Nasik, the Triambak plateau from where the Godavari river origins itself, that is why the Mahanadi itself coming. When it comes to the Andhra Pradesh, Noda passes through the Karnataka, that were Majra river and all the tributaries also coming from the Karnataka. Madhya Pradesh, Wardha river ochi, Madhya Pradesh asuchi, Venganga, Penganga, all these rivers are the tributaries of Godavari and hence Godavari passes through all these states including Chhattisgarh. So when I or you are asked to write a particular question, you have to confine yourself also to that particular reason as well. I will say the particular इश्यू के गोदावरी डिस्प्यूट केबे स्टार्ट होता केबे फाइनल जजमेंट आसला वर्तमान कौन चली तक आम देखा है ना तो जमती कि तुम प्रेजेंट स्टाटस देख द रिपोर्ट ऑन द डिसीजन इज गिविंग जुलाई 1980 रे दिया है ना तो आम देखा डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो आम देखा केबे होता ना 1969 रे होता आ तुम जजमेंट आसला देख 1980s रे जजमेंट आसला तो दैट मीन्स आम कहवा डिसीजन निया सरी जाइए बर्तमान आते किसी खास प्रॉब्लम नहीं खाली प्रॉब्लम अच्छी कौन ना ओडिशार टिके प्रॉब्लम अच्छी जहाँ को नहीं कि पोलाभरम प्रोजेक्ट को नहीं कि पोलाभरम प्रोजेक्ट इज ए डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट बिटवीन ओडिशा है ना दैट इज द छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश तो ये जो पोलाभरम डिस्प्यूट को तुम लिखिपर इट्स ए डिस्प्यूटेड दैट मीन्स ये जो तुम प्रोजेक्ट करुचे आंध्र प्रदेश ता द्वारा आम मालकानगिरी किसी गाँ बुड़ीज से यहाँ गोटे डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट पोलाभरम प्रोजेक्ट ओवर गोदावरी देन वी विल कम्स टू द कृष्णा रिवर डिस्प्यूट इन इंडिया कृष्णा इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुला and the second largest river in terms of the catchment area as well. ये भी तुम्हारा इंपोर्टेंस होप एवरीवन इज गेटिंग मी ओके देन आम देखा कृष्णा पाखक आसवा तो कृष्णा देखा इनवॉल्व्स द महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक ऑल दिस केबे होता 1969 रे कॉन्स्टिट्यूट करागला है ना वर्डिक्ट केबे आसला देख 1976 किंतु प्रेजेंट स्टेटस देखी देखा डिसीजन तो आसला किंतु फिर भी एमती ना कि पूरा फाइनल हो जाए कावेरी डिस्प्यूट आउ ना कि आम कृष्णा डिस्प्यूट्स ना फिर भी छोटे मोटे डिस्प्यूट केत टाइम रे आसी थाए है ना तो ये आमको देखा मिल देन आम आसवा नर्मदा डिस्प्यूट को देखा समस्ते जाच नर्मदा उपरे तो कृष्णार एते खास एते तुम प्रोजेक्ट प्रॉब्लम ना बर्तमान कृष्णार बट एबे तुम जो नर्मदा सरदार सरोवर डैम अच्छी समस्ते जाच जो सरदार सरोवर डैम अच्छी सरोवर डैम तार हाइट बढ़ेबार प्रॉब्लम कहार महाराष्ट्र प्रॉब्लम होची है ना राजस्थान ऑल्सो नॉट हैप्पी वाटर डिस्प्यूट को नहीं की तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात दीज आर द स्टेट इनवॉल्व्स इन द नर्मदा वाटर डिस्प्यूट कौन ना एम को राजस्थान कह कथा मत वाटर मिलू ना है ना मध्य प्रदेश कहवा कथा कि जदि हाइट बढ़ाऊच मोर एरिया सबमर्ज हो सो दैट मीन्स जो सरदार सरोवर डैम रो हाइट बढ़ागला से मध्य प्रदेश प्रॉब्लम आसला कि विलेजेस गुड़ा सबमर्ज हो है ना देन आम राजस्थान कथा कह राजस्थान कौच आमको ठीक से सफिशिएंट वाटर मिलूनी तो ये भी तुम 1969 रे कॉन्स्टिट्यूट करागला
है ना वर्डिक आसला 1719 रे वर्डिक आसला पुणी पुणी देखियो जी सरदार सरफर डैम को लेकिन पुणी आउ थे भी डिस्प्यूट आसी समस्ते जाच जो आमर कौन मेधा पाटेकर है ना जो ऑर्गेनाइजेशन से जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना देन रवि एंड बीस एटा तुम यही वर्ष यूपीएससी पचारि यही वर्ष 2022 रेन्स आसला जोग्राफी ऑप्शनल रे एथरे पंजाब हरियाणा राजस्थान दीज आर द स्टेट इनवॉल्व्स 1986 रे कॉन्स्टिट्यूट कराइला 1987 रे तुमरो आसिला है ना फिर भी डिस्प्यूटेड अच्छी एमती ना कि डिस्प्यूट नहीं नाउ जदि आम देखा वाटर शेयर को लेकिन डिस्प्यूट अच्छी बर्तमान जहाँ भी प्रॉब्लम चलुची बेसिकली वाटर शेयरिंग को लेकिन प्रॉब्लम चलती है ना लेट से मु कहबी कि वाटर शेयर हवा कथा 8:2 रेशियो रे किंबा लेट से 6:4 रेशियो रे और 5:5 रेशियो रे शेयर हवा कथा तो शेयरिंग कोठी ना कोठी गोटे प्रॉब्लम होची जेहेतु वाटर शेयरिंग ठीक ठाक है नहीं तेणु करके ये गोटे प्रॉब्लम रोचे हमको देखा जो कि वाटर शेयरिंग गोटे वन ऑफ द मेजर इशू रोचे कि डैम तैयारी करदेला कि वाटर छाड़ू ही नहीं डैम रू ये सब प्रॉब्लम हमको देखा जाउची देन कम्स टू द कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो थे केरला अच्छी कर्नाटक तमिलनाडु पुडुचेरी 1999 रे कहला एंड प्रेजेंट स्टेटस कौन बर्तमान चली डिस्प्यूटेड बर्तमान भी ये डिस्प्यूटेड कारण जो महादे रिवर अच्छी तुम बर्तमान स्टेटस भी देखिए भी एबे भी डिस्प्यूटेड होगी अच्छी है ना कारण आर वाटर शेयरिंग को लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटक भितर सब बड़े टेंशन ऑलवेज देयर इज अ टेंशन एवं तमिल मूवी भी से भी देखी थो वाटर डिस्प्यूट को नहीं की तो कोठी ना कोठी जो टेंशन बिटवीन आम कहवा टेंशन बिटवीन टीएन एंड कर्नाटक इज ऑलवेज देयर बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ द वाटर एंड मेकाडाटू प्रोजेक्ट मेकाडाटू प्रोजेक्ट रिसेंटली जदि आम देखा से कृष्णा सागर जो है ना कृष्णा सागर ही जो दैट इज व्हाट शिव सागर है ना सॉरी आई वुड नॉट कृष्णा सागर दैट इज द शिव सागर ही जो और आई वुड से द मेकाडाटू प्रोजेक्ट जो तुम एबे रिसेंटली कर्नाटक गवर्नमेंट अनाउंस करिछि गोटे प्रोजेक्ट करूछि मेकाडाटू प्रोजेक्ट ओवर द कावेरी रिवर ये कोठी ना कोठी प्रॉब्लम क्रिएट करूछि वर्तमान जो थे तमिलनाडु खुश नुह तमिलनाडु कह कथा जदि तुम अपर रिपारियन स्टेट ताली अपर रिपारियन स्टेट जदि तुम्हें वाटर डैम कंस्ट्रक्शन करिबो ताले कौन प्रॉब्लम हबो तो प्रॉब्लम हबो एया कि दैट मीन्स आम कहबा जो लो रिपारियन स्टेट अच्छी तांकू कौन जो वाटर मिलिबो नहीं सो दैट वुड बी द प्रॉब्लम ओके तो ये आमको देखा देन कृष्णा रिवर डिस्प्यूट पुणी आसो अप्रिल देख आउ थे तो एमती चली था एमती ना कि रिवर डिस्प्यूट थे सल्व होगा तो पुणी चलता आउ थे मर्च हम है ना तो दीज आर ऑल्सो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक ये तुमको आसे देन वंशधारा ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश आम देखा फेब्रुआरी 2000 होता डिसीजन सबमिट होता बट फर्दर रिपोर्ट इज पेंडिंग एबे भी सॉल्यूशन आसी ना नाउ सॉल्यूशन इज नॉट देयर है ना सॉल्यूशन इज नॉट देयर स्टिल पेंडिंग एटा भी आम कह कौन स्टिल पेंडिंग कृष्णा स्टिल पेंडिंग एबे भी पेंडिंग अच्छी एमती ना कि पुणी इश्यू चलता है एमती ना कि थरे सॉल्यूशन होगा लेट से महानदी एबे चली महानदी इश्यू पुणी 10 वर्ष पर आउ थे डैम तैयारी करदो पुणी आउ थे इश्यू आसो तो एमती इश्यू खत्म हो ना इश्यू बारंबार से कंटिन्यूअसली इश्यू चली देन महादेया रिवर अथा कहबी जोटा कि तुम गोवा रे मांडवी रिवर कहुए एथरे गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र इनवॉल्व होती रिपोर्ट इज पेंडिंग दैट मीन्स आम कहवा एक्टिव अच्छी ये कौन अच्छी तुम एक्टिव रिवर डिस्प्यूट दिस वन ऑल्सो व्हाट एक्टिव रिवर डिस्प्यूट वंशधारा एक्टिव रिवर डिस्प्यूट महानदी एक्टिव रिवर डिस्प्यूट ओके कावेरी एक्टिव ओके महानदी भी तुम एक्टिव ये भी एक्टिव रिवर डिस्प्यूट एबे भी वर्डिक आसी नहीं है ना केबे कॉन्स्टिट्यूट करागला 28 रे करागला दैट मीन्स आम कहवा 2018 रे सॉरी इट्स अबाउट 2018 रे हमें छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा मध्य है तुम डिस्प्यूट को लेकिन कौन कौन ना प्रेजेंट डिसीजन होची हमर कौन पेंडिंग द डिसीजन इज पेंडिंग और नॉट सॉल्व्ड ये हमें देखा है ना तो बाकी दिस आर द रिवर डिस्प्यूट तुम देखिपार जमी नर्मदा रिवर डिस्प्यूट ओके डिफरेंट रिवर डिस्प्यूट हमें देखुचे कृष्णा रिवर डिस्प्यूट रखिए क्या सूची रवि बीज रखिए क्या सूची है ना दिस आर द गोदावरी यू कैन सी पेरियार केरला एंड तमिलनाडु इशू
तुम यहाँ भी जाच चाहे से पेरियार डैम कथा नहीं जाओ है ना ये सब भी इश्यू अच्छी है ना केतल वाटर अधिक छाड़ दूँ तमिलनाडु केतल वाटर छाड़ू ना ये तुम प्रॉब्लम रोची है ना ना आम देखा द ट्राइब्यूनल केबे हैला तार डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट ऑफ इनवॉल्व तो आम गोटे गोटे आम देखा प्रथम कथा देख गोदावरी वाटर डिस्प्यूट 1969 रे है ना ये सब आसला एथरे इनवॉल्व होची देन कृष्णा कृष्णा देखिए 1969 देन एज पर नर्मदा 1969 so these are the तुमको दिया रवि बीस all these 86 1919 Kaveri Krishna 2004 again Vamsadhara 2010 Mahadea 2010 Mahanadi 2018 so these are the river that is the dispute is alive in India these are the alive in India then what interstate river dispute act अच्छी तुमर जो थे आमर सॉल्यूशन को कौन कराई एक्सप्लेन करा जाइए है ना जो थे आम देखा कि बा जो रिवर जो आमर ट्राइब्यूनल करा जाउची थ्रू दिस एक्ट ट्राइब्यूनल फॉर्मेशन हुए है ना ट्राइब्यूनल विल हैव द फाइनल एंड बाइंडिंग हमें डिसीजन कहीदे एमती ना कि थरे ट्राइब्यूनल हो ना तो इंक्लूडिंग द सरकारिया रिकमेंडेशन आम देखा 2002 रे अमेंड दैट इंक्लूड्स द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमिशन कौन पे आसला टू इम्प्रूव द सेंटर स्टेट रिलेशन समस्ते तो पढ़ी थो सेंटर स्टेट रिलेशन को इम्प्रूव करने आसला सरकारिया कमिशन है ना तो जो मानकर जोग्राफी ऑप्शनल अच्छी एनरोल कर दियो पूरा सिलेबस कवर होची 2 टाइम्स मु क्लास नौची इवनिंग रे भी नौची है ना आउ मॉर्निंग रे भी क्लास नौची पूरा सिलेबस को कवर करूची टेस्ट कराउची सिस्टमेटिकली होची एंड आई होप दैट वुड बी वर्क यू बेस्ट अदरवाइज डिफिकल्टीज है पारे बिकॉज पेपर नेचर चेंजिंग होची डोंट टेक द रिस्क द ट्राइब्यूनल हैज टू कॉन्स्टिट्यूट विद इन ए ईयर मु तुमको ऑलरेडी कही देछि केमती प्रोसीजर है ना द ट्राइब्यूनल मस्ट गिव इट्स अवार्ड विद इन द 3 इयर्स एमती किछि नाही है ना मैक्सिमम 5 वर्ष हो पारे बट देयर इज नो टाइम लिमिट किछि भी टाइम लिमिट नहीं तो ट्राइब्यूनल कथा छाड़ी दियो है ना implement हो पारिबो not implemented the tribunal award is not implemented immediately आम कहबा the concerned party seeks clarification within the 3 months आम कहबा ये भी गोटे problem the tribunal award has to force in order to the decree of the supreme court पुनी supreme court रो आम देखिबा supreme court से हाँ मारुचंती कि ना मारुचंती the award would be final and jurisdiction of the supreme court तापर कौन करिवो जेतर supreme court yes कर देबे then that would be awarded देन इश्यू आम देखा ट्राइब्यूनल को लेकिन इश्यू कौन हो देख एक तो ट्राइब्यूनल हूँ आमर एडहॉक ट्राइब्यूनल्स हो प्रथम कथा मुझे देखी कि एम होती सब एडहॉक ट्राइब्यूनल्स ऑल आर द एडहॉक ट्राइब्यूनल्स सेकेंड दो दे आर फाइनल एंड बाइंडिंग बट इन कौन सी ना टाइम बॉन्ड नुह दे आर नॉट टाइम बॉन्डेड ओके और बाइंडिंग नहीं टाइम रो किसी बाइंडिंग नहीं देन आउ कौन प्रॉब्लम देखा कि कौटी ना फ्रिक्वेंटली गोटे रिवर 2-3 थर आमको कौन कहते ट्राइब्यूनल करने पड़ुची देन आउ कौन आम कहवा कि आमको दरकार गोटे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन दरकार जमीक रिवर बेड अथॉरिटी होगा डेवलपमेंट अथॉरिटी एमती आमको दरकार जो कि कन्स्टांटली मॉनिटर करेंगे ट्राइब्यूनल्स फाइनल रहिबो बियॉन्ड द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ना ये भी जहाँ बट इंडिविजुअल स्टेट से मैंने अप्रोच करेंगे सुप्रीम कोर्ट अंडर द स्पेशल व्हाट आई वुड से लीव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट तुम अप्लाई कर जदि हैप्पी नुह शेयरिंग द व्हाट and the article 32 by linking the disputes violation of the article 21 of the Indian constitution guarantees the right to life kind of water knowledge जने बंची पारिबो नहीं ना हमें कंपोजिशन ऑफ ट्राइब्यूनल में देखा इट्स नॉट मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है ना ओनली हमें देखा जुडिशियरी आसे ना पीपल जिते बड़े आमर गोटे ट्राइब्यूनल होची खाली जुडिशियल मेंबर कहीं रहिबो सेथरे सोशल आसु कई गोटे सोशल एक्टिविस्ट आसतु जो मन सोशल इश्यूज पछे जने इकोनोमिस्ट थांतु सेथरे है ना जने लॉयर थांतु तो है ना ये सब मिक्स हवा दरकार ना कि मोनोटोनस चीज मल्टी डिसिप्लिनरी हवा दरकार जोटा कि प्रेजेंटली मल्टी डिसिप्लिनरी नुह देन डेटा कोठी ना कोठी हमको डेटार अभाव रोची
है ना ताकू भी हमको प्रॉपर डेटा दरकार एंड ऑन बायस्ड होता दरकार दैट शुड नॉट बी बायस्ड सो दिस वुड भी तो आम पूरा रिवर डिस्प्यूट को आम डिस्कस कले है ना पूरा रिवर डिस्प्यूट आम डिस्कस करूचे है ना तो नेक्सस बिटवीन आम वाटर एंड पॉलिटिक्स ताकू नहीं कि हमें पॉलिटिक्स कौचे ये भी गोटे प्रॉब्लम हमको देखा जाउची कॉलोनियल लेगेसी अच्छी सेटा भी हमको देखा पड़ो से जो डैम तैयारी होता है सब है ना अमेंडमेंट बिल कथा तुम देखा डिस्प्यूट नाउ व्हाट इंटरेस्टेड डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल जो बिल की तुम होता है बिल पास ही नहीं है ना जेहेतु बिल पास है ही नहीं आम ताको पढ़ी न पढ़ाटा बेटर ये तेणु ये पूरा थिला आम देखा पूरा रिवर डिस्प्यूट आम देखला ये बिल पढ़ीदेव आई विल शेयर दिस पीडीएफ ये पीडीएफ मुझे शेयर करदेव समस्त सहित है ना एंड टाइम फ्रेम जहाँ भी तुम दिखाई रेकमेंडेशन केमती ट्राइब्यूनल डिसीजन टाइम फ्रेम कौन कंपोजिशन कौन ये सब तुम बिल रे अच्छी जो नुआ बिल पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस होती बट बिल जेहेतु पास ही ना तेणुक आम ताको न पढ़ियाटा बेटर कल जस्ट हाव ए लुक तुमको हाँ गोटे लुक कि एटलिस्ट दिस आर द थिंग्स गोइंग टू बी गुड मॉर्निंग एवरीवन सो होप समस्त को बुझा पड़ुଛି रिवर डिस्प्यूट्स तापर आम क्वेश्चन आज भी पढ़ जो तुम नेक्स्ट टेस्ट है ना जोटा तो आग को जो टेस्ट हम चाहे से जीएस हो कि एसए हो कि ऑप्शनल से आम ये क्वेश्चन दि जाव तुमको रिवर डिस्प्यूट इंडिविजुअल हो पारे कि आम कलेक्टिव हो पारे और दैट कुड बी ए जनरल क्वेश्चन हो पारे और इट कुड बी ए पर्टिकुलर क्वेश्चन गोटे पर्टिकुलर क्वेश्चन हो पारे है ना सो दिस इज ऑल अबाउट द रिवर डिस्प्यूट्स इन इंडिया तार आम सॉल्यूशन भी देखले प्रॉब्लम भी देखले कजेस भी देखले कजेस कौन एंड आम तार मैप वगैरह सब देखीदे है ना सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस लेसन एंड द लेसन वुड बी ऑल्सो शेयर्ड विद योर group and the different platforms as well so we will that is what continuously we are putting our effort to I would say what जदि आम कह कि एफर्ट आम कंटिन्यूअसली आम एफर्ट दौचे है ना आपको आम कौन करवा कि आपण तुम मान आगे प्रेजेंट करने है ना ऑलवेज वी आर ट्राइंग टू आम कह कि चाहूँ कि केते जल्दी आम प्रेजेंट कर तुम मान आगे आ गोटे सिस्टमेटिक वे रे आम प्रेजेंट करने चाहूचे है ना तेणु आम कन्स्टांटली एफर्ट पुट करुचे बुझीपार नहीं जो थे पुरुषोत्तम सार अच्छे ललित सार अच्छी मु अच्छी एंड वी आर पुटिंग अवर ऑल द एफर्ट बिहाइंड दिस एंड थ्रोइंग द ऑल वेटेज एंड आई होप बिलीव यू guys will take benefit out of this all so wish you all the best and share all this what lesson with your friends and let them also know about these platforms so thank you everyone have a good day